Hello, bonjour, hola, salam. It's the first word you learn in any new language, the basic sign of welcome that shows your intent to talk to someone. Most likely, you learned the basic English greetings before you even started investing time in your language skills. But if you want to make the most of your first impression, there are tons of more colorful ways to say hello. So hello everyone, this is your own teacher Ramsha Zapta from English Nest. Welcome back to my channel. As I have started this video, you have come to know that today our topic is English spoken words and phrases for greetings. So guys, do you really want to know the most professional way to greet colleagues, or some informal terms to begin a text to your little cousin, or maybe you just want to talk to your boss? This ultimate list will guide you through the words and phrases to greet anyone in English with confidence. So let's begin with formal greetings. What are formal greetings? Sometimes you need to use more formal or business language to keep a professional tone. Here are the most common situations when such greetings are necessary. The list is given here. First of all, it's job interview, maybe business meeting, communicating with top management or CEO, chatting with a new colleague, having a conversation with clients, showing respect to an older person, speaking with someone you barely know. So these all situations actually need formal greetings. So let's start with the very first one, that is how do you do. Very simple. How do you do? Like if you're looking for a very formal phrase for someone you meet for the first time, this one will be the most suitable. While this salutation is quite uncommon today, bache, you can still hear it from older people. Like this is not common in your generation maybe, but older people commonly use these kinds of phrases. Okay, hello, how do you do? It is perfect for a business dinner or a formal event such as a conference. As professional speech in every language, beta, the most appropriate response is neutral or positive. I am doing well, thank you, or fine, thank you, to keep someone distance even if you are actually having a very bad day. ठीक है? Have you ever said कि नहीं 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 आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, अच्छा कि आपने पूछ लिया, let me tell you मेरे तो आज सर में बहुत दर्द था. You never do that because you are in a formal situation. ठीक है? If you use the formal greeting sometimes, how do you do, is strangely used as a statement rather than a question. This most often happens when shaking hands with someone for the first time. It is easy to hear if this is the case. Then there will be no inflection at the end of the sentence. But in this sentence, the correct response is to repeat the question back to the asker in the same flat tone. How do you do? I'm fine. How do you do? That's it. If somebody is talking to you in a very formal way, you need to be the formal one in the same way. Okay beta, the very next formal phrase is nice to meet you or pleased to meet you. This is one of the respectful greeting examples you can use replying to someone you meet for the very first time. For example, if I say good morning, I am Alex White from some company maybe, the reply should be nice to meet you, Mr. White. It doesn't need emotions in it, it just needs to be very very formal. Okay, now moving towards the third one, how have you been? How have you been? Like repeat it with me, how have you been? This is a polite way to ask how are you. When you have not seen a person for a long time, ask this question only if you have met someone before. Okay? If you have met somebody before, then you are able or you are allowed to ask this question, how have you been? Kaisa guzra time? Kaise ho? Okay? This is the actual meaning. How have you been? I have been busy working a lot. How about you? ठीक है? You can see the responses as well. मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रही how to use formal phrases. I'm also telling you how to respond to those formal phrases. Okay, beta? Moving on to the very fourth and important one, that is good morning, good afternoon, or good evening. The greetings change depending on the time of the day.
ठीक है. अगर डेफिनेटली इफ़ इट्स लाइक आफ्टर 12 o'clock तो यू हैव टू से गुड आफ्टरनून. इट्स इफ़ इट इज़ बिफोर 12 o'clock तो यू कैन से गुड मॉर्निंग. इफ़ इट इज़ लाइक आफ्टर 3 or 4 PM, आफ्टर 3 or 4 PM यू कैन से गुड इवनिंग. ठीक है. तो जनरली टाइमिंग्स आपको यहाँ दी गई हैं, बट कीप इन माइंड दैट डू नॉट एवर से गुड नाइट, बिकॉज गुड नाइट इज़ नॉट अ सैल्यूटेशन. इन फॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ यूज टू से गुड बाय. ठीक है. इफ़ यू से गुड नाइट, हाउ आर यू कैन नॉट से दैट. कभी किसी को कहा है गुड नाइट, कैसे हो? नो, यू हैव नेवर सेड दैट, आई एम श्योर. ठीक है. तो इट वॉज नाइस टू मीट यू, गुड नाइट. इट्स लाइक साइनिंग ऑफ और मे बी कॉलिंग इट अ डे. अच्छा, ये वाली ग्रीटिंग्स जो हैं, ये गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये गुड इवनिंग, ये नॉर्मली जब आप किसी बिजनेस डील के लिए जाते हो ये तब आप यूज़ करते हो. लेट्स सपोज आप किसी एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए हो एंड यू नीड टू टॉक टू देम, यू मेट देम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड डोंट नो द बेसिकली द रिलीजन ऑफ दैट पर्सन एज वेल, बिकॉज इट्स जस्ट अ बिजनेस डील. तो यू नॉर्मली यूज़ दीज न्यूट्रल फ्रेजेस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. लेट्स सपोज आप किसी प्रॉपर्टी वाले के पास गए हो. हाँ, प्रॉपर्टी से खैर याद आया कि आई हैव अ वेरी 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 वंडरफुल डील फॉर यू. आप लोग लाजमी विज़िट करें FSF बिल्डर्स को, अ नेम टू ट्रस्ट. बहुत इन्होंने अच्छा काम किया है अब तक अल्हम्दुलिल्लाह. इन्होंने पिछले 1.5 साल में जो है काफ़ी सारी कंस्ट्रक्शंस की हैं और सेल और परचेज़ DHA मुल्तान में भी ये लोग काफ़ी इसमें जो है वो इन हैं और इनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आ रहा है. तो नीचे मैंने इनका वेबसाइट भी दी है आपको, डू विज़िट दैट एज़ वेल. Okay beta, getting back to our topic, formal greetings for letters and emails. So what do you actually need to use the phrases dear sir or madam to whom it may concern, to the hiring manager, maybe dear Mr. X, Mrs. X, Ms. X, Miss or professor or doctor, to whom you are writing the mail or the letter. Okay, you have to use these kinds of phrases. Let's move on to informal greetings now. What are informal greetings, बच्चे? When it comes to a conversation with a neighbor or a chit chat with a colleague during a coffee break, you can opt for these informal greetings. Situations where these fit naturally include a casual meeting with colleague. आप किसी colleague से मिल रहे हो, एक casual meeting, like that colleague is very close to you as well. Having a conversation with your team at work, आपकी एक टीम बनाई हुई है आपने, जिसके साथ आपने सुबह शाम काम करना है, आप उनके साथ सारे दिन फॉर्मल तो नहीं रह सकते हो, तो आपने क्या करना होता है, आपने उनसे बहुत इनफॉर्मली बात करनी होती है. नेटवर्किंग इवेंट्स हैं आपके, ग्रीटिंग नेबर्स हैं, चैटिंग और फ्रेंड है. इसमें आपके क्या आ जाएंगी, हाय, हेलो, हे, दिस काइंड्स ऑफ वर्ड्स. ओके, अभी मैं आपको इसका सब बताऊँगी. हाय, हेलो, हे. As you almost certainly know already, hello and hi are the most popular greetings for informal situations. जब भी हम किसी से बात करते हैं, इवन हम जब फ़ोन भी उठाते हैं तो वो unintentionally say hello. So basically that is a very informal greeting. You know, if somebody is calling you तो वो आपको जानने वाला ही होगा, और अगर कोई नहीं भी होता तो hello जो है वो आपका तकरीबन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में चला जाता है. हाई भी आपका इनफॉर्मल में जाता है. जनरली दे आर फॉलोड बाय द पर्सन's नेम. हेलो माइकल, हाउ आर यू? हाई मोनिका, नाइस टू सी यू. ठीक है. फिर हमारा नेक्स्ट आ जाता है मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग. हम पहले क्या कर रहे थे फॉर्मल सिचुएशंस में, वी वर यूजिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग. इट्स जस्ट मॉर्निंग. आफ्टरनून हम लोग आजकल क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस का और टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो हम अक्सर नॉर्मली सुबह उठ के किसी को टेक्स्ट भी कर रहे होते हैं तो प्रॉपर गुड मॉर्निंग कम ही लिखते हैं. इट इज़ ऑलवेज लाइक मॉर्निंग और इवनिंग. दिस इज़ द फ्रेंडली एंड वार्म वे टू ग्रीट समवन इन मोस्ट इनफॉर्मल सिचुएशंस. इट साउंड्स पर्टिकुलरली natural if you are just walking past someone who you relate to informally but do not have time for a long chat with, such as a postman or a neighbor or a cafe assistant. जहाँ पे आप रोज़ जाते हो. लेट्स सपोज इफ़ आई गो टू मैकडोनल्ड्स डेली, तो मैं वहाँ जाके जानने वाले होते हैं क्योंकि वहाँ के सब सेल्समैन आपके, तो आप वहाँ जाके क्या बात करते हो, या वेटर से या किसी से भी आप बात करते हो मॉर्निंग. ठीक है. इट्स जस्ट यू डोंट वांट टू हैव अ चिट चैट विद देम, इट्स जस्ट यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम एंड यू आर मेकिंग देम फील गुड. दैट्स इट. They said it will just as well to start a longer conversation. कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस तरह बात करो तो शायद कन्वर्सेशन लॉन्ग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली इसका मतलब ये है कि आपने बस उनसे थोड़ा सा रिलेट करना था. दैट्स इट.
ओके, द नेक्स्ट वन इज हाउ आर यू डूइंग, हाउ इज इट गोइंग. ठीक है, दिस इज अ कैजुअल वे ऑफ आस्किंग हाउ आर यू. बहुत ही कैजुअल वे है ये पूछने का कि कैसे हो, हाउ आर यू डूइंग और हाउ इज इट गोइंग. पीपल प्रेफर टू आस्क वन ऑफ दीज क्वेश्चंस आफ्टर द मेन ग्रीटिंग. ठीक है, मेन ग्रीटिंग क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, हेलो, हाई के बाद हम जो अगली बात करते हैं दैट इज हाउ आर यू डूइंग और हाउ इज इट गोइंग. यूजुअली इट इज फॉलोड बाय अ ब्रीफ पॉजिटिव आंसर. फॉर इंस्टेंस, हेलो अमेंडा, हाउ आर यू डूइंग, फाइन थैंक्स, एंड यू. ठीक है, बेटा दिस इज़ वेरी नेसेसरी कि आपने एंड यू, व्हाट अबाउट यू आंसर में, रिस्पॉन्स में ये ज़रूर कहना है. बिकॉज यू नो इट साउंड्स वेरी रूड कि आप ये कहो कि आपसे कोई पूछे हाउ आर यू डूइंग, फाइन. यू नो, यू फेल्ट दैट रूडनेस. येस यू डू. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने आगे से पूछना है आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू, एंड यू. जब हम फॉर्मल सिचुएशन में तो हम कहेंगे आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू. अब हम क्योंकि इसमें हैं इनफॉर्मल सिचुएशन में तो विल से फाइन थैंक्स एंड यू. सो यू नो यू कैन सी द क्लियर डिफरेंस. नाउ द नेक्स्ट वन इज़ नाइस टू सी यू, इट्स ग्रेट टू सी यू, गुड टू सी यू. ठीक है, अब ये क्या है सब, ये हमारा है informal. ठीक है, when you have not seen a person for a while or meet somebody unexpectedly, use one of these friendly greetings. You can use them at the beginning of a conversation or just after the initial hello के फ़ौरन बाद आप कह सकते हो hello, nice to meet you or nice to see you, hello, it's great to see you, hello, so good to see you. So you can see, you know, you can hear me very clearly जब मैं बात कर रही हूँ. तो ये तरीका होता है किसी को खुशी ज़ाहिर करने का. एक वो था pleased to meet you, that was, you know, that doesn't need emotions. लेकिन इसमें informal में you can see like hello, nice to see you. अब बात hello Veronica, nice to see you there. तो आपके एक emotions involve हो जाते हैं इसमें. ठीक हो गया. Let's move on to the next one, that is long time no see, it's been a while. Like you haven't met somebody for like so many days. तो आप उसको क्या कहोगे. These common phrases are used to greet an old friend or begin a conversation with a person you haven't seen for a very long time. These expressions are often followed by questions like how are you or what's new, and it is great way to start small talk about what has happened since your last meeting. Hey John, long time no see, how are you. एक हे जॉन, काफ़ी अर्सा हो गया, दिखे ही नहीं, कैसे हो. आई एम फाइन थैंक्स, व्हाट्स न्यू. हाय ताया, हाउ इज इट गोइंग, गुड थैंक्स. आई हैवंट सीन यू फॉर एजेस, यस इट्स बीन अ वाइल. ठीक है, अब आपने कैसे आंसर किया, मैंने आपको एजेस का मतलब ये नहीं है कि वाकई आपने उसको कई लाइक एजेस से देखा नहीं है. इट्स लाइक कि आप काफ़ी अर्सा हो गया आपने इसको नहीं देखा, तो उसका कि यस इट्स बीन अ वाइल, हाँ काफ़ी अर्सा हो गया. ठीक हो गया. अब हम चलते हैं एक क्विक से रिव्यू की तरफ. जल्दी से मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ग्रीटिंग्स फॉर्मल क्या हैं और उसके रिस्पॉन्सेस क्या होने चाहिए, इनफॉर्मल क्या हैं और उसका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए. गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, हेलो, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू, हाउ आर यू डूइंग, आई एम वेरी वेल थैंक यू, व्हाट अबाउट यू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स. हाय, हाउ इज योर लाइफ, टेरिफिक और ग्रेट, एंड यू, what's news, just fine thanks, how's everything, all right thanks, how's business, pretty well, what about you, good to see you, thank you, or thanks maybe. ठीक है, so that's it. So, you know, I hope you like the topic. Have a very good day, see you all soon, and signing off with this quote, if you cannot do great things, do small things in a great way. Okay, and you know, keep on watching my videos, keep on liking, sharing and subscribing. See you in the next video. Bye bye.